Sixth standard and welcome to English class. Today we are going to do fourth unit from your English semester 2 textbook. And the title of the unit is Reuse, Reduce, Recycle. जिसको हम 3 R's से भी जानते हैं. 3 R's. What is the meaning of 3 R's? R's, H-O-U-R, has R's name. 3 R's I have written over here. You can see this. Now, what are these 3 R's? 3 R कौन सी? So let us understand the meaning of these 3 R's. 3 R's. One R is reuse, second is reduce, and third is recycle. तो reuse का मतलब क्या है? What is the meaning of reuse? Reuse means to use the things, materials in their original form. Instead of throwing them away, we can pass those materials on to others who can use them. मतलब कि अगर कोई भी चीज जो आपको काम नहीं आ रही है, कोई भी anything, any material, कोई भी whatever, जो भी चीज है अभी आपके काम की नहीं है, तो जब हमारे काम की कोई चीज नहीं होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं. थ्रो. But don't throw that away because it can be useful for somebody else. It can be useful for somebody else. जो आपकी जो चीज है वो शायद आपके लिए अभी ट्रैश है. ट्रैश यानी यूजलेस है, आपके लिए बेकार चीज है, आपको नहीं चाहिए, आपके लिए यूजलेस है ना. लेकिन वो जो आपका जो ट्रैश है, जो यूजलेस चीज है आपके लिए, किसी और के लिए वो ट्रेजर है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना. तो वी शुड नॉट थ्रो दैट थिंग, वी शुड गिव इट टू समवन. You can pass it to someone who needs it, right? So we should always try to reuse the things. Second, it is said reduce. Second R is reduce. Reduce का मतलब है कि we should reduce waste. हमें वेस्ट कम करना चाहिए. We should reduce waste. मतलब कि कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे वाटर है, ट्रीज है, राइट, ये नेचुरल रिसोर्सेज है. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है. हम उसको मैन बना नहीं सकता है. मैन कैन नॉट मेक वाटर, मैन कैन नॉट मेक लैंड, है ना. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की चीजें हैं ना, क्योंकि मैन कैन नॉट मेक दैट, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. तो उनको हमें बहुत वाइजली यूज करना चाहिए. क्या करना चाहिए? बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, बहुत समझदारी से यूज करना चाहिए ताकि वो खत्म ना हो जाए. बिकॉज वो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, वो सिर्फ आपके ही काम नहीं आने वाले हैं या हमारे सिर्फ अभी के लिए काम नहीं आने वाले, वो जनरेशन टू जनरेशन फ्यूचर के लिए भी चाहिए, फ्यूचर में भी काम आएंगे. तो अगर हम ही सारा कुछ यूज कर लेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू लीव फॉर अदर्स, है ना, फॉर आवर फ्यूचर. तो इसीलिए बोला जाता है कि वेस्ट कम करो, रिड्यूस वेस्ट. जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे कुछ खाना लिया होता है हम लोगों ने और हम लोगों ने पूरा प्लेट भर दिया होता है, एंड देन क्या कर देते हैं, हम वेस्ट में जाने देते हैं, राइट. बट टेक लेस, जितना आपको चाहिए उतना ही लो ताकि आप वेस्ट ना करो, राइट. तो रिड्यूस वेस्ट यानी यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली. यहाँ पर वाइजली की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है,
and using less than usual in order to avoid waste. ठीक है. Then third R जो है उसको अपन बोलते हैं रिसाइकिल. रिसाइकिल मतलब कि हम कोई भी चीज को दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं. डोंट थ्रो अवे द थिंग्स व्हिच कैन बी रिसाइकिल. हम दूसरे किसी तरह से भी उसको यूज कर सकते हैं, राइट. जैसे सिंपल कोई एग्जांपल है कि अगर कोई डब्बा है आपके वेस्ट हो गया तो हम वो उस डब्बे को हम रिसाइकिल करें, हम उसका डस्टबिन बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. देयर आर अदर वे. जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीस 3 R's, राइट. रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल का मतलब हम समझेंगे. ठीक है. और ये आई थिंक पीपल मस्ट हैव इवन स्टडीड इन साइंस आल्सो. ओके. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिविटी 1. अब यहाँ पर जो है ये एक स्टोरी बताई है एंड लेट अस सी कि स्टोरी में क्या बोला है. एक्टिविटी 1, Buddha's disciple gets a new robe. And let us see what is the story about. Once the disciple of Buddha asked him if he could get a new robe. रोब का मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग लूज सा गारमेंट होता है ना, जैसा ऐसा लंबा सा लॉन्ग लूज सा कोई कुर्ता, कोई गारमेंट पहनते हैं जो, है ना. तो एक बार डिसाइपल मतलब एक जो बुद्धा के जो एक डिसाइपल थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या मैं कोई नया रोब लेकर आ सकता हूँ. ही वांटेड अ न्यू गारमेंट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि पुराना वाला जो था वो पूरा खराब हो गया होगा, पूरा ओल्ड हो गया होगा, फट गया होगा, तो उसको नया चाहिए था पहनने के लिए. उन्होंने बुद्धा से पूछा कि क्या मैं नया रोब लेकर आ सकता हूँ. After Buddha made sure that the old robe could not be used any longer, क्योंकि बुद्धा ने देखा कि अब ये जो पुराना वाला है वो तो बिल्कुल ही एकदम यूजलेस हो गया है, उसको अब यूज नहीं कर सकते, आप नहीं पहन सकते, तो मतलब नया लाना ही पड़ेगा. सो ही अलाउड द डिसाइपल टू गेट अ न्यू वन. उन्होंने अपने डिसाइपल जो थे उनके, राइट, उनको बोला ठीक है नया लेकर आ जाओ. A few days later, Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe. वो जो डिसाइपल जो था वो नया रोब ले आया. थोड़े दिन के बाद बुद्धा ने पूछा उनसे, तुम हैप्पी हो, अब खुश हो, तुमको नया गारमेंट मिल गया, नया अटायर मिल गया, क्लॉथ मिल गया, क्लोथ्स मिल गए, है ना, मतलब नया रोब मिल गया, तो तुम हैप्पी हो. The disciple said, yes master, I am happy. I am very happy. बुद्धा ने पूछा तो उन्होंने बोला, यस मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नया रोब मिला है. हमको भी कोई नए कपड़े मिलते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं ना. He said, yes master, I am very happy. तो बुद्धा ने पूछा, Buddha asked, tell me though, now that you have a new robe, what did you do with your old robe? बुद्धा ने अपने डिसाइपल से पूछा, अब तुम्हें पहनने के लिए नया रोब मिल गया, तो तुमने वो पुराने रोब का क्या किया? What did you do with the old robe? Disciple, master, I am still using it. I am using it as my new bedspread. The disciple जो थे, उनका जो शिष्य जो थे, he said, master, वो मैं अभी भी यूज करता हूँ, वो ओल्ड वाला जो रोब है, आई एम यूजिंग इट, मैं अभी भी यूज करता हूँ एज ए न्यू बेड स्प्रेड. मतलब बेड स्प्रेड यानी बेड के ऊपर कवर करने के लिए मैं उसको यूज करता हूँ, मैंने उसको फेंका नहीं है. बुद्धा ने पूछा, देन व्हाट डिड यू डू विद योर ओल्ड बेड स्प्रेड? तो इफ अगर वो तुम बेड स्प्रेड की तरह यूज कर रहे हो, मतलब बेडशीट की तरह अगर आप यूज कर रहे हो, तो तुम्हारी जो बेडशीट थी उसका तुमने क्या किया? Disciple said, Master, I am using my old bedspread as my new window curtain. तो शिष्य ने, वो डिसाइपल ने बोला, वो जो पुरानी जो बेडशीट जो थी उसको मैंने क्या बना दिया? अपना कर्टन बना दिया, पर्दे बना दिए, विंडो का पर्दा बना दिया.
बुद्धा asks, what about your old curtain? तो जो तुम्हारे पास पुराने कर्टन थे उसका क्या किया तुमने? So disciple said, we are using it to handle hot utensils in the kitchen. वो जो पुराने कर्टन्स जो थे उससे हम लोग वो कपड़ा जो है वो क्लॉथ जो है हम किचन में यूज कर रहे हैं। गरम गरम यूटेंसिल्स उठाने के लिए मम्मी क्लॉथ यूज करती है ना, मतलब वी आर यूजिंग इट इन द किचन। Buddha, oh, what a good idea. And can you tell me, what did they do with the old cloth they used in the kitchen? बुद्धा ने पूछा, तो किचन में जो पुराना कपड़ा था उसका क्या किया? Disciple said, we are using it to mop the floor. यानी हम उस वो जो पहला पुराना वाला जो कपड़ा था उससे हम फ्लोर को मॉप करते हैं, यानी पोछे के लिए यूज करते हैं वो कपड़ा। Then what they have done with the old rag being used to mop the floor? तो जो पहले वाला कपड़ा था जिससे तो मॉपिंग करते थे, जो लोग मॉपिंग करते थे, पोछा लगाते थे, वो कपड़े का क्या हुआ? Master disciple said, Master, they were very torn. The old rags were only small strips of cloth. डिसाइपल ने बोला, मास्टर वो तो बहुत टोन हो गए थे, पूरे फट गए थे, तो वो जो सारे रैग्स निकल गए थे, पूरा एक रैग्स पूरा एकदम स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स पूरा धागे धागे निकल गए थे। बुद्धा, आह, सो दे आर वेस्ट देन। बुद्धा ने बोला, अच्छा, दैट मीन्स वो वेस्ट हो गए। The disciple said, no master, the old rags are now the new wicks in the lamp. डिसाइपल उनका जो शिष्य था, उन्होंने बोला, नो मास्टर, वो वेस्ट नहीं हो गए, वो रैग्स जो है वो मैं लैम्प में जलाने के काम में यूज करता हूँ। कैन यू सी दिस लैम्प? अब वो लैम्प को जलाने के लिए भी वो पत्ती चाहिए होती है ना, ऐसा है ना, तो बोला कि मैं उसको जलाने के काम लेता हूँ। बुद्धा स्माइल एंड वेंट अवे सैटिस्फाइड। बुद्धा को बड़ी खुशी हुई, he was very happy. My disciple, he did not waste any of the things. So he smiled and he went away satisfied. तो आप देखो कि अगर वो नया कपड़ा लाए तो पुराना को उन्होंने फेंका नहीं, पुराने वाले का उन्होंने क्या बना दिया? बेडशीट। जो पुरानी वाली बेडशीट थी उसका उन्होंने क्या बना दिया? कर्टन। और जो कर्टन थे he started using in the kitchen, और जो किचन के कपड़े थे they started using it for mopping, पोछा लगाने। और जो पुराने वाले थे वो इनके जो रैग्स निकल गए थे दे यूज्ड इट इन द लैम्प। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी ना, लैम्प्स ही जलाने पड़ते थे, दिए जलाने पड़ते थे रोशनी करने के लिए, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? हर एक चीज को रीयूज किया, है ना। तो बुद्धा वाज वेरी हैप्पी एंड he went away satisfied, right? So let's see in activity 2 what is they asking. Buddha's disciple needed a new robe, but he did not throw away the old one. Survey your classmates. I ask each person what was the last old thing he threw in the dustbin. List all the things that your classmates have thrown away in the last few days. Make the long list you can. अब यहाँ पर बुद्धा का जो डिसाइपल थे उन्होंने तो हर एक चीज को अच्छी तरह से रीयूज किया, मतलब द ओल्ड वंस को फेंका नहीं, पुरानी चीज को फेंका नहीं, उसको यूज किया। नाउ instead of asking your classmates, you have to answer this question, that which are the old things which you felt this is useless for me, and you have thrown it in the dustbin. You have to make a long list of that, right? So make a list of this. And activity 3, study the list of the old things that your classmates threw in the trash. Find out one thing that you think might be of most useful if you reused it in the own way. अब मैंने एक या दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सपोज हमारी जो कोई जैसे इधर है, आई विल रीयूज द ओल्ड, यहाँ पर एक सेंटेंस है, यू हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। तो आई हैव सेड जीन्स पैंट, मेरी जो जीन्स जो है ना
अगर वो ओल्ड हो गई है तो मैं उसको रीयूज कर सकती हूँ। कैसे? उसको मैं कट करके एज अ न्यू बैग, एक अच्छा सा बैग बना सकती हूँ जीन्स पैंट का, है ना? तो इसी तरह आपको डायलॉग लिखनी है। राइट अ डायलॉग लाइक द वन इन द बुद्धा स्टोरी बिगनिंग विद न्यू थिंग्स, मेक योर ओन डायलॉग। सपोज बुद्धा's disciple has said, now that you have a new, अब उधर तो रोब लाया था वो, तो सपोज बुद्धा ने बोला नाउ दैट यू हैव अ न्यू शर्ट, अगर आपके पास न्यू शर्ट आई तो व्हाट डिड यू डू विद द ओल्ड वन, तुमने अपनी ओल्ड शर्ट के साथ क्या किया? तो आपको इधर आंसर करना है कि आपने जो है ओल्ड शर्ट के साथ क्या किया। What did you make of the old shirt? Right? You have to write your answers. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो ओल्ड शर्ट का मैं बोलूँ कि मैंने पिलो कवर बना दिया, आई मेड अ पिलो कवर, राइट? So what did you do with then what did you do with the old pillow cover? So I will say I made straps, मैंने straps बना दिए उसके। तो इसी तरह आपको जो है आंसर करने हैं ये डायलॉग फॉर्म में, you have to complete this activity. Okay, so let's see what is in activity 4. Now this is also wonderful. You have read some stories and activities about reusing many things to make something new. अभी भी हमने पढ़ा और ऐसे हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है। एंड आई थिंक अपनी हर एक की स्कूल में, अपनी स्कूल में एक्टिविटी भी होती है, मेक समथिंग न्यू फ्रॉम द ओल्ड थिंग्स, राइट? बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, तो आपकी एक्टिविटी होती है ना स्कूल में, तो कोई भी वेस्ट की चीज में से हम उसमें से कुछ नई बेस्ट चीज बनाकर आते हैं इन दैट एक्टिविटी। ओके, सो बट you can also think of many ways to use one thing. This idea is often used on blog on the internet. People think of as many ways to use one thing as they can. Post the many uses on the blog to give other people good ideas for using common things. For example, here is a list of 13 ways to use a common paper clip. अब ये जो पेपर क्लिप आपको पिक्चर में दी हुई है, इस पेपर क्लिप का आप क्या क्या कर सकते हैं, in what ways it is useful to you. जैसे यहाँ पर लिखा है poke tiny holes, right? Clean fingernails, clean कर सकते हैं, hang small ornaments, छोटे छोटे से ornaments में hang करके रख सकते हैं, unclog glue bottle, ये जो glue bottles जो है खुल जाती हैं, अब उसका जो कवर होता है वो तो टूट जाता है खुलने के बाद, तो हम उसको जो है बंद कर सकते हैं ये glue bottles को। यूज एज इमरजेंसी पेन टू होल्ड हैंड, आपका अगर कुछ सिलाई खुल गई हो कपड़े की तो फिलहाल हम लोगों ने वो पेन लगा दिया। सब्स्टिट्यूट फॉर ट्विस्ट टाई टू क्लोज अ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को बंद करने के लिए ट्विस्ट करके हम ये पेन यूज कर सकते हैं टू क्लोज अ प्लास्टिक बैग। क्लीन द लिटिल रोलर्स इन योर कंप्यूटर माउस, हमारे जो कंप्यूटर माउस को अगर क्लीन करना है तो हम ये पेन की हेल्प से हम क्लीन कर सकते हैं। यूज द सब्स्टिट्यूट टूथपिक, लोग अपने दांत क्लीन करने के लिए टूथपिक की तरह यूज कर सकते हैं। यूज एज इनएक्सपेंसिव इयररिंग्स, इयररिंग्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। पुश रीसेट बटन ऑन मेनी डिवाइस, राइट? काफी सारे डिवाइसेस कई बार वो बटन टूट जाते हैं तो हम रीसेट वो बटन के लिए हम we can push a reset button on many devices with this clip. Made a necklace or bracelet with many hooked together, काफी सारी pins को अच्छी तरह से hook करके हम necklace या bracelet भी बना सकते हैं। Use as keychain, fold papers together, and they have given you 13 different ways to use pins. Use these pins. Uncommon paper clip set. You have to just write only one use, आपका खुद का, कि आप इस क्लिप को किस तरह यूज करोगे, but it should not be written over here.
13 में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए. Think of one more use of paper clip. Just one more use you have to write कि आप उस clip को कैसे use करोगे, but it should not be written. ठीक है, something different. Make sure your use is not already on that list. Share it with your classmate. Did anyone think of same use as you did? Who thought of the most unusual use? Okay, so this is what you have to do. अब एक्टिविटी 5, अभी मैंने बताया था ना कि सेइंग है ना, जैसे आप कुछ अगर आपके लिए ट्रैश है किसी और के लिए ट्रेजर है. व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू एक्टिविटी 1 में जो स्टोरी, राइट? तो here are few sayings and you have to choose how many number of students who chose each saying. ठीक है, one man's trash is another man's treasure. आपके लिए जो यूजलेस है वो किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, यूजफुल होगा. तो आपके लिए जो ट्रैश है, वेस्ट है, वो किसी और के लिए ट्रेजर है, तो वो रीयूज कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, यू शुड गिव इट. वेस्ट नॉट, वांट नॉट. कोई भी चीज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और ज्यादा वॉन्ट्स नहीं रखने चाहिए. जो हमारे पास है उसी को ही हमें जो है यूज करना सीखना चाहिए. गार्बेज इन, गार्बेज आउट. व्हाट शुड बी थ्रोन, मतलब डोंट स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स, राइट? जो चीज हम गार्बेज में डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमको पहले ये देखना चाहिए कैन वी मेक यूज ऑफ दैट थिंग. और एज वी सेड कि वो आपके लिए गार्बेज इन में जा रहा है लेकिन किसी और के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो गार्बेज में से निकाल कर यूज करेगा, राइट? So how many students choose the same saying you did? Did you like the most popular saying or one of the less? इसमें से आपको कौन सी saying अच्छी लगी? What do you think is the meaning of your favorite saying? जो भी आपने जो saying choose की है, which is your favorite, why do you think is important and what is the meaning of that? Okay. Find out student who chose the same saying but wrote a different meaning that you think is interesting. Make up a saying about trash or recycling or reusing things or another related idea of your own and print it nicely on a banner below. ये banner है, right? You have to make your own saying. खुद अच्छी सी saying आपको बनानी है, जैसे मैंने बदर बनाया है. Reuse and recycle for you, reduce for future. इस तरह you have to write and print it in the banner. Okay. And activity 6 जो है एक poem है, very simple poem but based on recycling, reducing and reusing. Let us see. First I'll read the whole stanza, then I'll explain. We have been working on recycling all the trash we can. We have been working on recycling. It's a very simple plan. Separate your glass and paper. Separate plastic from tin. Take the trash that you have recycled to your recycling bin. The other stanza is saying that we are working on recycling, right? What is the meaning of recycling? How we can use the thing in a different way. You see, all the trash we can, जो भी हमारा trash जो है उसको हम recycle कैसे करें? It is a very simple plan. You have to first make a plan and then separate your glass and paper. आपका जो trash है उसमें glass और paper को अलग-अलग करो. Separate plastic from tin, उसको अलग-अलग करो. So that वो जो trash जो है वो recycle हो सके, right? Second stanza, we have been working on reducing all the trash we can. We have been working on reducing. It's a very simple plan. Don't go wasting any products. Use exactly what you need. Don't buy things in extra wrapping. Reduce and you'll succeed. यहाँ पर saying second stanza में that we are working on reducing. ये जो
waste any product. कोई भी product को waste मत करो. Whatever you need, buy only exactly that. We have the habit of, buying many things and storing it, and so just buy what you actually really need it, right? What necessity है वो buy करो, right? Don't buy things in extra wrapping. Reduce and you'll succeed. तो इतना extra सारा लेकर और स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है. Just buy things what you need, right? Don't go on wasting. Third stanza, we've been working on reusing all the trash we can. We've been working on reusing. It's a very simple plan. If it is a paper bag you are using, don't use it once, but twice. Give old clothes and toys to someone to reuse them. That'd be nice. Reusing, as we discussed earlier also, we try to reuse the things. अगर कोई पेपर बैग है आपके पास, so instead of using it once and then throwing it, try to use it twice, right? If you have old clothes and toys, give it to someone, right? If you do not need it, give it to someone so that they can use it for themselves, right? And they can pass it to somebody else. And so that would be nice rather than throwing it. So this was a simple poem. Now in this activity 7, you have to just write a new words with your own new instructions. Choose recycling, reducing and reusing for your I have been working on. You have been working on what? You have been working on recycling, reducing, reusing and all the trash, right? और फिर उसका आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या वर्किंग एंड रीयूजिंग इट. रीयूजिंग तो आपने कौन सी चीज रीयूज की है या रिड्यूस की है या रिसाइकिल की है. जस्ट इन योर ओन फॉर्म यू हैव टू राइट अ पोएम. ठीक है, जस्ट शेयर. एंड एक्टिविटी 8 ये हमारे साथ बहुत होता है ना, मतलब काफी सारी, जैसे हम कभी पार्टी बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें लेफ्ट आउट हो जाती हैं, लेफ्ट ओवर हो जाती है. लेफ्ट आउट सॉरी लेफ्ट ओवर हो जाती है, मतलब बच जाती है. तो लेट अस सी दिस एक्टिविटी 8 में क्या है. The students of one school made this list of the things they have left over for a party. उनकी स्टूडेंट्स ने एक लिस्ट बनाई है, राइट. उनकी पार्टी खत्म हो गई, अब उनके पास ये सारी चीजें बची हुई है. 30 napkins, paper napkins, 2 cake plates, 4 cups, 6 plastic spoons, half cake, dirty paper tablecloth, 10 pop balloons, banners, flowers from centerpieces, confetti swept from the floor, 1 party bowler, 2 tone party hats, streamers, 3 burned cake candles. अब ये जो है, ये सारी लेफ्ट ओवर चीजें हैं पार्टी. Write a paragraph describing one thing you can make or things you can do with the things left over. Don't throw anything away. अब यहाँ पर क्या है कि जो भी चीजें हमारे पास है, ये जो लेफ्ट ओवर पार्टी की जो चीजें हैं, व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ, इसमें से आप क्या बना सकते हो. यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. ठीक है. What things can you use? Describing one thing you can make, कुछ आप बना सकते हो, you can do with the things left over. ठीक है. This you have to write. You don't have to throw these things away. You have to make something. ठीक है. So you have to write a paragraph based on that. Best out of waste. Activity 9. Very, very good activity. Activity 9. Wonderful. Bags to buildings. यहाँ पर बताया है कि कैसे मतलब लेफ्ट ओवर चीजों से उन्होंने बिल्डिंग बनाई है. बैग्स टू बिल्डिंग्स.
Did you know that some people are making new buildings with recycled trash? ट्रैश जो कचरा उसको रिसाइकिल करके न्यू बिल्डिंग्स बनने में कैसे वन आर्किटेक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट द वन हु मेक्स बिल्डिंग्स है ना one architect from America has helped people in Haiti build new homes called earthships. अब उन्होंने वो न्यू होम्स बनाना earthships called earthships उन्होंने नाम दिया है earthships और न्यू होम्स बना रहे हैं लेकिन वो न्यू होम्स कौन सी चीजों के बन रहे हैं फ्रॉम द टायर्स bottles and other trash that were left after hurricane destroyed many homes. हरिकेन जो नेचुरल कैलामिटी जो हुआ उससे जो मतलब बहुत सारे लोगों के घर जो है टूट गए right now destroyed many homes. Now they are building new homes out of all these things, tires and bottles and other trash. Using recycled materials in building is becoming popular in many places. And this was just one example. In country में here they are giving another example of a school in Pune, Maharashtra, India, is built almost entirely from recycled material. स्कूल बना हुआ है पूरा जो स्कूल जो बना हुआ है वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है अब कैसे मतलब अब पहले तो ये जो हम अर्थ वाला देख लेंगे देयर वॉल मेड ऑफ टायर्स और कंक्रीट बॉटल्स ठीक है ओके रिसाइकल मटेरियल का वो स्कूल कौन सी चीजों से बनाया है ये देखते हैं दिस इज द स्कूल which is school named Aman Setu Primary School. The name of the school, Aman Setu Primary School, was built with walls made of plastic bottles. Walls किस चीज की बनी हुई है प्लास्टिक बॉटल्स cow dung उसको हम गोबर बोलते हैं bamboo and straw. All the classrooms were built using the earth bag technique. This is a way of building by filling sacks with a mix of earth and waste products, sealing them, then stacking them. They are then tied with wire and plastered over. उन्होंने ये जो भी ट्रैश की जो चीजें हैं उनसे जो है मतलब फिल किया है मिक्स किया है अर्थ वेस्ट प्रोडक्ट से सील किया है स्टैक किया है टाई किया है प्लास्टर किया है right the children at Aman Setu play in open spaces and learn about nature. They help take care of animals and grow some of the food they eat. अमन सेतु स्कूल में जो बच्चे क्या सीखते हैं नेचर में ही मतलब ओपन में जो है वो पढ़ते हैं और ओपन में नेचर के बारे में सीखते हैं वो एनिमल्स की टेक केयर करना सीखते हैं और वो फूड ग्रो करते हैं मतलब फार्मिंग भी उनको सिखाया जाता है एंड grow some of the food they eat. Even their uniforms are colored with vegetable dyes. When they need extra space, they have glass in the shelf of an old bus. अब उनकी जो यूनिफॉर्म भी है वो भी मतलब वेजिटेबल डाइज वो केमिकल डाइज से नहीं बनी हुई है राइट वेजिटेबल डाइज से नेचुरल डाइज कलर से बनी हुई है और अगर उनको कोई एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है तो जो ओल्ड बस का की अगर जगह होती है यू कैन सी इन द पिक्चर राइट वो उनकी क्लासरूम होती है कंजर्विंग एनर्जी हैपेंस इवन बिफोर स्कूल स्टार्ट्स एवरीवन कम्स टू स्कूल इन अ स्कूल बस to reduce the energy needed to get to school. सब लोग एक ही स्कूल बस में आते हैं so that you know at least we can save energy. At Aman Setu, everything is reduced, reused and recycled. इस स्कूल में सारी जो है 3 hours are used है ना मतलब रिसाइकिल होती है चीजें रीयूज होती है और they do not waste reduce. On activity 10, again this activity is you have to choose one. What will you do? Let us see. Jatin is writing a new post for his blog. He's trying to think of 10 new ways to use a tin can. Tin होता है ना tin, डब्बा, tin can.
अब ही इज यूजिंग कि वो जो टिन कैन जो है, जो ट्रैश है, जो वेस्ट है अभी, वो मैं अब कौन सी किस तरह यूज कर सकता हूँ उस टिन कैन, राइट? क्योंकि अगर टिन में से जो भी चीज होती है वो खत्म हो जाती है तो हम फेंक देते हैं वो टिन को, लेकिन अब फेंकना नहीं है, हमें रीयूज करना है उसको, है ना? तो वो टिन कैन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? तो जतिन हैज रिटन 9 points, 9 things he has thought of trying with this a tin can. 10th one you have to write. Write one more. It has to be good use for a tin can and it cannot be one that is already on the list. तो अब जतिन ने लिखा है कि I can use in tin can as a toothbrush holder, फिर a tin and a string telephone, a form for drawing perfect circles, a biscuit shaped cutter, a drum, a large insect house, a recycled tin can for the metal, a decoration behind a wedding card, a hat. ये सब उसने 9 जो है यूजेस उसने सोची है जतिन ने। 10th वन आपको you have to think about it and you have to write. It should not be included in the list. So with this, I end my unit 4. See you next. See you in the next lecture. Bye. Take care.